को स्वागत किया है मेरे यूट्यूब चैनल से। और बात करेंगे आप लोगों के साथ आज REC Q3 रिजल्ट के बारे में। REC Q3 रिजल्ट, नेट प्रॉफिट रेज टू 4043 करोड़ एंड डिक्लेयर 46% interim dividend. REC Ltd Q3 financial year 26 net profit 4043 crore declared and 4.60 per share. Dividend gross NPA improved to 0.88%, CRAR at 224.26 fall. Result assist quality of dividend details. New Delhi, January 29, 2026. REC Limited, a Maharashtra Public Sector Power. New Delhi, January 2029. REC Limited, Maharashtra Public Sector Power Sector Financial announced its Q3 financial year 26 result today, reporting the standalone net profit of 4,043.408 crore. This marks a marginally increase from 4,029.09 crore in the same quarter last year, Q3 financial year 2025. और जो फाइनेंशियल हाईलाइट स्टेटलॉन Q3 2026 और नेट प्रॉफिट हो रहा है 4,043.08 करोड़ vs 4,029.09 करोड़ इन Q3 फाइनेंशियल ईयर 2025। जो फाइनेंशियल हाईलाइट हो रहा है स्टेटलॉन का और जो Q3 फाइनेंशियल ईयर 2026 का जो नेट प्रॉफिट हो रहा है आप लोगों ने देखा जो 4,043.08 करोड़ vs 4,029.09 करोड़ इन Q3 फाइनेंशियल ईयर 25। और टोटल जो इनकम हो रहा है जो आप लोगों ने देखा 4,952.50 करोड़ और प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो 5,116.40 करोड़ और अर्निंग पर शेयर EPS 15.35 और लोन बुक आप लोगों ने देखा 5,81,787 करोड़ एज ऑफ December 31, 2025। और आप लोगों ने देखा जो शेयर होल्डर रिवॉर्ड थर्ड interim dividend declared. The board of directors declared the third interim dividend of 46%, 4.6 per equity share of 10 face value. और फाइनेंशियल ईयर 2025 to 26 और record date Friday, February 6, 2026 और payment date on or before February 27 to 26. The company had earlier paid dividend totaling 9.20 per share in financial year 26. और आप लोगों ने देखा जो assist quality of key metrics, provisioning coverage improved 76.96% for stage 3 और NEPA assist from 71.73 in March 2025. Gross NPA ratio improved to 0.88% from 1.95% December 2024. और net NEPA ratio improved to 0.20% from 0.74% in December 24 और capital adequacy CRAR strong at 24.26. और जो 9 month performance April December 2025 for the 9-month period the standalone net profit stood 12,919.96 crore, a growth from 11,477.01 crore in 9am financial year 2025। और आप लोगों ने देखा जो consolidated result आप लोगों ने देखा including it is the subsidiary REC Power Development and Consultants Limited or the
Consolidated net profit Q3 financial year 26 was 4,052.44 crore. 4,052.44 crore. Other key development, the company wrote off 709.78 crore of the loan pertaining to Bhadreshwar Vidyut Private Limited following an IBC resolution plan with a corresponding reversal of 59.54 crore in expected credit loss ECL provision. REC confirmed there were no default on any debt repayment during the quarter. The results were approved by the board at a meeting that commenced at 11:30 a.m. and concluded at 1:05 p.m. About REC Limited. REC Limited is a Maharatna Central Public Sector Enterprise under the Ministry of Power, specializing in the finance, power, logistics and the infrastructure project across India. It is the premier power sector financer supporting the generation, transmission and distribution project through loans and the consultancy service. दोस्तों आज आप लोगों से डिस्कस कर रहे हैं जो आरईसी का बारे में और आरईसी Q3 रिजल्ट के बारे में और आरईसी नेट प्रॉफिट रेस 4,043 करोड़ डिक्लेयर 46% एंटीरियम डिविडेंड और आरईसी एलटीडी Q3 फाइनेंशियल 2026 नेट प्रॉफिट जो 4,043 करोड़ डिक्लेयर कर दिया कंपनी ने और 4.6 per share dividend gross NPA improved to 0.88%. CRA at 24.26 full result assess equality and dividend details. और ये है न्यू डेली जनवरी और आप लोगों ने देखा फाइनेंशियल हाइलाइट्स डेटलॉन. थैंक यू.